Mass migration has produced a huge worldwide economy of its own, which has dashed so fast during the past few years that the figures have dashed experts. जो मास माइग्रेशन हो रहा है, जैसे जो पुअर कंट्रीज से या फिर जो मिडिल क्लास एडवांस डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जो माइग्रेशन हो रहा है, जो नंबर ऑफ पीपल जो जा रहे हैं, रेमिटेंसीज जो जा रही हैं, सो huge worldwide economy of its own which has accelerated. Accelerated का मीनिंग क्या होता है? Increase होना. Accelerated so fast during the past few years that the figures have dashed experts, astonished experts. Astonished का मतलब क्या होता है? चमत्कारी. मतलब जो जिसको देखकर experts को भी क्या लग रहा है कि हाँ ये एक बिल्कुल चमत्कार हो रहा है. जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं. लास्ट ईयर remittances sent home by migrants were expected to exceed $232 billion according to the World Bank. World Bank के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर रेमिटेंसेस ने अपने घरों पे जो पैसे भेजे हैं ये डेवलप्ड कंट्री से वो $232 बिलियन से भी ज्यादा थे. Which dash these figures, which tracks these figures vital through the flow of remittances is to alleviate the plight of the migrants family. Alleviate का मतलब क्या होता है? सुधार करना किसी चीज में. Clear? Remittances is to alleviate the plight of the migrants family. It can't on its own lift entire nation out of poverty. क्या होता है? कहते हैं उनकी families का जो सिचुएशन है उसमें सुधार आ जाता है, but इट कांट ऑन इट्स ओन, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा. लिफ्ट एंटायर नेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी, पूरे नेशन को आउट ऑफ पॉवर्टी नहीं कर सकती वो चीज. Those who study the impacts of remittances argue that money allows poor countries to put off basic decisions of economic management like reforming their tax collection systems and building schools. So our first answer is has accelerated, have astonished, to exceed, which tracks these figures, the impacts of remittances, has, have, had के बाद क्या आता है? verb की third form. has accelerated, have astonished, but कुछ सेंटेंसेस में नहीं होता है क्योंकि इनकी भी जो ग्रामर के आपके रूल्स होती हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, एग्जम्पशंस होता है. हैज, हैव, हैड 100% एप्लीकेबल नहीं रहेगा. क्लियर? तो ये चीज हमें चेक करनी है. समटाइम हमारे जो नंबर ऑफ ब्लैंक्स होते हैं, नंबर ऑफ जो ऑप्शंस आते हैं ब्लैंक्स में, वहां पर गिवन ही नहीं होता हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर? तो हमें चेक करना है कि जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जो रूल हैं उनके भी अपने कुछ एग्जम्पशंस हैं. क्लियर? सो हैज एक्सेलरेटेड, have astonished, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू एक्सीड, ट्रैक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या है? these figures है तो इट मींस यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल वर्ड आएगा. tracks these figures. The who study, those who study the dash of remittances, those who study the impacts, क्योंकि रेमिटेंसेस बहुत सारे हैं तो इम्पैक्ट्स भी क्या बढ़ेंगे? ज्यादा बढ़ेंगे. So our first, okay, next. Plant serves as the conduct of energy into the biosphere, provides food and materials used by humans, and they dash our environments, and they shape our environment. क्या करते हैं? हमें प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? कंडक्ट ऑफ एनर्जी होते हैं. बायोस्फीयर में प्रोवाइड फूड एंड मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, एंड दे शेप आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को शेप देते हैं. According to Ehrlich and Fromer, the three major challenges facing humanity in our time are food, energy, and environment. Dash. Environment degradation. All three are plant related. All of our food is produced by plants, either directly or indirectly by animals that eat them. Plants are our dash of energy production. Plants are our source of energy production, and they are intimately involved in climate change, and a major factor is a variety of environmental concerns, including agriculture expansion and its impact on habitat destruction and waterway pollution. What's more, none of these issues is independent of each other. Climate change
places additional stresses on the food supply and on various habitats. So plant research is instrumental in addressing all of these problems and moving into the future. For plant research to move significantly forward, inherent and former technological development is critical, both to test existing hypotheses and to gain new information and generate fresh hypotheses. If we are to make headway in understanding how these essential organisms function and build the foundation for a sustainable future, then we need to apply the most advanced technologies available to the study of plant life, they say. So our first answer is they shape our environment. they यहाँ पे किसके लिए है? प्लांट्स के लिए. They shape our environment. Environmental degradation. Environmental degradation क्या आपका? Collocation है. Source of energy production. Next. When humans began farming some 12,000 years ago, they altered the future of our dash forever. They altered the future of our species forever. Our ancestors were ecological pioneers. Pioneers कौन होते हैं? जो किसी फार्मिंग को, मान लीजिए हमारे जो फोर फादर्स है उन्होंने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो वो वहाँ पे क्या है? पोनियर. ठीक है, किसी भी काम को जो सबसे पहले स्टार्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? पोनियर. Pioneers discovering and cultivating the most valuable crops, scaling them up to feed entire communities and transforming wild crops so fundamentally that they became dependent on humans for their survival. Farming in the words of National Geographic's Genographic Project showed the seed for the modern age. Modern age के लिए क्या करते हैं? उन्होंने की सीड लगा रहे हैं. क्लियर? जो मॉडर्न एज में जिसके फ्रूट्स मिलेंगे हम. सो फर्स्ट आंसर इज फ्यूचर ऑफ आवर स्पीसीज फॉरएवर. इकोलॉजिकल पोनियर्स. पोनियर वर्ड्स यहाँ पे किसके लिए आया है? एंसेस्टर्स के लिए. क्लियर? नेक्स्ट, मॉडर्न एज. पूर्वज. Snails are not traditionally known for quick thinking. Snails are not traditionally known. Snails को traditionally ऐसे नहीं जाना जाता था कि वो क्या है? Quick thinker है. Clear? But new research shows they can make complex decisions using just 2 brain cells in dash. In findings. Findings क्यों आया? कहाँ से पता चला? Research से. Research से क्या पता चला? कि just 2 brain cells को use करके snails decisions ले सकते हैं, complex decisions. That could help engineers design more efficient robots. Scientists at the University of Sussex attached electrodes to the dash of fresh water, to the heads of freshwater snails as they searched for lettuce. They found lettuce होता है जो सलाद पत्ता जिसको हम बोलते हैं. Clear? They found that just one cell was used by the mollusc to tell if it was dash. If it was hungry. उन्होंने क्या कहा? Just one cell को वो use करते हैं अगर वो hungry होते हैं. Or not while another egg. Check out the answer. So our first answer is saline findings. To the heads of freshwater. Was hungry. Thank you. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.